Okay, here's an idea that I really like from a book that I really like. And मैं लोगों का काफ़ी दिमाग भी खाता हूँ इसके बारे में, but मुझे अच्छा लगता है तो बता रहा हूँ. Uh, Reward for good behavior works a lot better as a motivator than punishment for bad behavior. ये चीज़ अगर किसी को कहो तो उनका यूजुअली रिस्पॉन्स आता है कि हाँ मे बी, या फिर दूसरा रिस्पॉन्स कि नहीं मैंने देख रखा है, मैं अगर लोगों को अच्छे से बात करता हूँ तो कुछ काम नहीं करते, अगर मुझे काम कराना है तो लोगों को डांटना ही पड़ेगा. You hear this, that if any time that someone is doing well you praise them तो वो कभी दोबारा अच्छा नहीं करेंगे, but if you punish people that's the only way to get people to do something. ये काफ़ी बार सुनने में आता है. Here's why this is not true. और हमेशा सच नहीं होता एटलीस्ट. अगर लेट्स से कोई एक बंदा राइट, वो एक टेस्ट के लिए पढ़ रहा है, उसके डेली जो प्रैक्टिस टेस्ट वो दे रहा है उसमें 80 आ रहे हैं, 80 का एवरेज है उसका. एंड दैट एवरेज ऑफ 80, लेट्स से वो मंडे को दिया 80, लेट्स से उसने ट्यूसडे को दिया ही गेट्स 84, वेंसडे को ही गेट्स 77, थर्सडे को ही गेट्स 79, एंड फ्राइडे को ही गेट्स 81, समथिंग लाइक दैट. नाउ एवरेज इज 80. नाउ लेट्स से वन डे ही गेट्स 60. उसका ट्यूटर क्या कहेगा उससे? You're doing so bad, ये क्या है? How the hell do you get 60? इतना गंदा. And the next day, the guy will be, the student, he'll be back achieving 80s again. And the tutor will think कि ये मेरे डांटने की वजह से ऊपर आया. But that's not the case. होता क्या है कि जब भी कोई एवरेज से बहुत हटके ऑब्जर्वेशन आती है, whenever we notice something that's so far away from the average, we tend to think that that's not good. And then we try to correct it. And then when things go back, we think कि वो हमारे actions की वजह से वापस गई थी, जबकि it was just random. वो randomly ऊपर या नीचे हुई थी कोई चीज़, and वो randomly ऊपर या नीचे चली गई, back to its mean. It's regression to the mean. ये idea discuss हुआ था Daniel Kahneman और Amos Tversky की book Thinking Fast and Slow में, in which he talked about an Israeli fighter pilot instructor. वो इंस्ट्रक्टर क्या करते थे कि उनसे जब ये चीज़ बताई गई तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, जब भी हम किसी कैडेट को डांटते हैं बुरी परफॉर्मेंस के लिए, वो तभी अच्छा हो पाता है. See, the people जो इस philosophy पे ascribe करते हैं, they're not wrong necessarily, but वो समझ रहे हैं कि उनके actions cause हैं change का. That's not true. The change happened randomly and things went back to the average value because they reset, regression to the mean. And oftentimes काफ़ी बार लोगों को लगता है कि डांटने की वजह से कहानी की वजह से की चीज़ें अच्छी हुई हैं, या फिर किसी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है वो डांटने की वजह से, पनिशमेंट की वजह से हुई है. It's not true. What we should be doing, और ये मेरा आइडिया है, not Kahneman का, what we should be doing is we should be appreciating small improvements in the average. कि अगर किसी के 80s का एवरेज है, उसके 82, 83, 84 आ रहे हैं, then we like, okay, this is good, बढ़िया. Instead of punishing them whenever things go completely bad, because वो चीज़ कभी काम नहीं करती. वो randomly गंदा हुआ था and वो randomly अच्छा भी हो जाता है. Okay, here's an idea that I really like from a book that I really like. और जो मैं लोगों को काफ़ी बार बताता हूँ, उनका दिमाग खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. मोटिवेशन है ना, ओह इतनी गंदी स्टार्ट है.